Hello guys, welcome back to my channel. Today I teach you chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. इस चैप्टर के मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द नोडल पेन इन द पाई बॉन्ड इज इथेन इज लोकेटेड इन। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द मॉलिक्यूलर प्लेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन दिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा, ये देखिए आया गया है 2001 में, तो ये वाला हमारा होगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, the compound which containing both ionic and covalent bond is। so इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी both are correct options। okay, now question number 4, which of the following molecule has bond pair long air and bond pair long air repulsion। so इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, H2O। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इज दिस T and E is equal to this, ESU and D is equal to this। what is the percent of ionic character in HCl? so इसमें ionic character, so this is correct option। मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो भी आपकी टफ हैं तो उसके मैं आपको हिंट भी प्रोवाइड कराऊंगी जो भी आपके इसमें न्यूमेरिकल स्टफ आ रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एलिमेंट विच एट नंबर 11 एंड 17 कंबाइंड द कंपाउंड इज। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वाटर सॉल्यूबल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Now question number 7, which of the following molecule has higher dipole moment? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा हमारा, NH3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, phosphate of a metal M has the molecule MCPO3 का whole twice for the molecule for the formula sulfate will be। so इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, MSO4। now question number 9, the number of unpaired electron in oxygen atom O2 is। so option number B is correct, 2,2 is correct option। now question number 10, the configuration this represented -2 2 okay, so इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और नाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल एंड द फ्री नाइट्रोफिनॉल because of। so option number D is correct। okay, now question number 30, which of the following pair cannot exist together? so option number B and option number C is both are correct options। okay, now question number 14, among the following P pi and D pi overlap over could be represent। so option number A is correct। now question number 15, incorrect statement is। so read it and बताइए आप कौन सी incorrect statement है। yes, option number B is incorrect। now question number 16, what is isoelectronic which nitrosonium ion NO+। so option number A and option number B both are correct options। okay, now question number 17, which has dipole moment।
This is correct option. Now question number 18. What is true statement? So read it carefully, then reply answer please. So option number C and option number D both are true statement. Okay. Now question number 19. Which of the following is planar? So option number D is correct. Now question number 20. The bond between carbon atom 1 and carbon atom 2 is compound. This involve the hybrid orbitals. So option number SP, yes, this is correct option, SP and sp2. Now question number 21. The hydrogen bond is stronger in. So hydrogen bond is stronger in. So this is a important. Sorry, this is the answer of this, and this is also important question. Okay. Now question number 22. The hybridization of carbon atom is C single bond H, triple bond C, single bond CS, double bond CS2 is. So this is also most important question. तो इसको ऑप्शन देखते हैं हम लोग. तो ऑप्शन नंबर 20, yes, इसको ऑप्शन दिस इज करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. The cadmium ion, this and N2, this is but of the correct. N2 is chemically intolerant because. So yes, this is correct answer, option number B. Now question number 24. Which bond is more polar? So this is very easy option. So this is the correct option. Now question number 25. Which of these is weakest? So this is also very easy question. Weakest ऐसे बताना है. Weakest क्या है? So this is a weakest. Okay. Now question number 26. Among the following species, identify the isostructure pair. So option number, yes, so option number C is correct. Okay. Now question number 27. The critical temperature of water is higher than that of O2 because the H2O molecule has. So this is a very important question. देखिए IIT 2000 में आया हुआ था क्वेश्चन. तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग. So this is the correct option. Okay. Option number D. Now question number 28. The hybridization of atom orbital of nitrogen is NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus R. So this is correct option, sp2, sp and sp3 respectively. Now question number 29. Which of the following are the isoelectronic and isostructural? So this is correct option, option number A. Now question number 30. Among the following grouping which represent the collection of isoelectronic species? So option number C is correct. Okay. Now question number 31. The relationship between the dissociation energy of the N2 and N2 plus is. So इसका option number this is correct option. Okay. Now question number 32. Main axis of a diatomic molecule is Z. Atomic molecule px and py overlap to form which of the following orbitals? Okay, so option number D is correct. No bond will formed. Okay. इसमें now question number 33. The chain size ratio of the cation determine its polarizing power. Which one of the following the sequence represent the increasing order of the polarizing power of the cationic species K plus C2, Ca2 plus Mg2 plus and Ba2 plus. So और भी ऑप्शन इसके देख सकते हैं. Yes, so this is correct option. Now question number 35. In which of the following association processes the bond order has increasing and the magnetic behavior has changed?
Okay, so option number C is correct option. Okay, now question number 36. Among the following the paramagnetic compound is, so K2O, this is paramagnetic compound. Now question number 37. The species having bond order different from that in CO is, so this is correct option NO2 NO minus. Now question number, the species the percentage of p character in the orbital forming p single bond in p4 is, so this is correct option. Now question number 39. The species having paramedical shape is, so option number D is correct. Now question number 40. In which of the following species the central atom has a type of hybridization which is not the same as that present in the other three? So this is correct option. Now question number 41. Among the following the maximum covalent character is shown by the compound, so option number D is correct. Now question number 42. The pair of species of oxygen and their magnetic behavior are noted below. Which of the following present the character description? So option number C is correct. Now question number 43. Which one of the following pair is isostructural example having the same shape and hybridization? Okay, so option number D is correct. Now question number 44. The pair of species which the same bond order is, so this is correct option. Now question number 45. Bond order is 1.5 is shown by, so this is correct option. Now question number 46. Which of the following is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. तो इसके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Dipole included dipole instruction are the present in which of the following pair, so option number A is correct, HCl and He atom. Okay, now question number 50. Which one of the following molecule containing number 5 bonds, so option number D is correct. Now question number 51. Which of the following molecule have the maximum dipole moment, so maximum dipole, yes, this is correct option. Now question number 52. Which one of the following species has planar triangular shape, so option number, this is correct option. Now question number 55. Assuming a 2s2p mixing in not operating, the paramagnetic species among the following is, so this is most important question. Now option number C is correct, C2. Now hydrogen bonding playing a central role which of the following phenomena, so इसमें भी हमारा ये भी this is correct, this option is also correct and this is also correct. ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55. द पेयर ऑफ reagent that yield paramagnetic species are, so this is also correct, this is also correct, this is also correct. ये तीनों हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं. A, B, C is the correct option, not D. Okay, this is the wrong option. Now last question 56. The intermolecular interaction that is depending on the
inverse cube of distance between the molecules is. So yes, so this is correct option, hydrogen bond. Now अब हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चंस की, आपको मैं हिंट प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी क्वेश्चन इसमें टफ हैं उसकी मैं हिंट आपको प्रोवाइड कराती हूँ। यस, दिस इज हिंट फॉर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सो हमारे पास हिंट सेकंड की दी गई है, थर्ड की नहीं दी गई है, फोर्थ की दी गई है, फिफ्थ की दी गई है, सिक्स्थ की दी गई है, सेवन्थ की दी गई है हिंट, एट्थ की हिंट दी गई है, 9th 10th 11th की हिंट नहीं दी गई है, 12 13 14 की हिंट नहीं दी गई है, 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23 की हिंट नहीं दी गई है, 24 की हिंट यहाँ पे दी गई है। नाउ हिंट नंबर 25 की हिंट नहीं दी गई है, 26 की हिंट दी गई है यहाँ पे हमारी, और 27 की नहीं दी गई, 28 की नहीं दी गई है, 29 की, 30 31। आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोग वो सॉल्व करके देखिए। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हिंट से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।